हमको अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई शुड बी लर्न इंग्लिश? मिस्टर कृष्णा, व्हाट्स योर आंसर? Don't take too much time and reply. If you take too much time and reply, then how much time will you take in learning? You will take definitely a lot of time in learning. That is why reply instantly. Yes, mister, you reply. Why you want to learn English and why I should be learning English? Because it will be used in competitive exam. It will be used in competitive exam. Okay. It is very helpful for me. Very helpful for you. Okay. मिस्टर, वाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड वाई इंग्लिश इज नेसेसरी? हिंदी में बताइए, अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी आपके लिए? बताओ मिस्टर ओम, आपके लिए अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है? भाई आप कोचिंग आए हो तो क्यों जरूरी है? वाई? ये बताएंगे यस बताइए। यस मिस्टर लवकुश, आप ही बताओ। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भाषा सीखना चाहते हो, हम क्यों सीखना चाहते हैं, अगर हमें उसका कारण ही पता नहीं है तो हम कैसे सीखेंगे? ठीक है। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब ये रोड कहाँ जाती है? उसने कहा भाई साहब रोड कहीं नहीं जाती, रोड तो वहीं रहती है, हमको ही जाना पड़ता है। क्या ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे जिसका पता ना हो कि गाड़ी कहाँ जा रही है? क्या ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? कोई भी काम करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वह काम क्यों करना चाहते हैं और फिर उस काम का क्या परिणाम होगा। ठीक है। ऐसे ही थोड़ी आप मन से कोई भी काम कर लेते हो, कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है आपका। लड़के भी शादी में बारात में वैसे नहीं जाते, लड़के भी बारात में खूब जोर जोर से डांस करते हैं, वो भी किसी न किसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। फोकट में कोई नहीं जाता, सिर्फ खाने पीने नहीं जाते लड़के अकेले कि खाने पीने, खाते तो है ही हैं, उसके अलावा भी उनके जो सीसीटीवी कैमरे जो नेचुरल है ना, वो खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फाइंडिंग करते रहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई nothing is worthless on this planet, everything is worthwhile. If you are in the class, there should be a strong reason behind it why you are here today. Okay, Mr. लवकुश, आप बताइए अंग्रेजी, why should we learn English? हमें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए? अगर हम सीख जाते हैं तो क्या भला हो जाएगा हमारा? English language very compulsory and clear and speak English understand. What? हिंदी में बताओ आप तो, क्यों सीखना चाहिए हमें अंग्रेजी? ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज स्पष्ट समझ में आती है और ज्यादा कम शब्दों में बात हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, यस, ओके, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑफ कोर्स, लैंग्वेज इंग्लिश, ऑफ कोर्स, मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज। right, I think that you have given a proper answer. Why should we learn English? There are many reasons behind of learning this language. The first thing is that English is your subject in every class. Every class you have one English subject. For that you should have a best command over the language, because you have a language subject. You have a two languages. One is Hindi, another is English. Then third is Sanskrit. Sanskrit is the third language, but the very common language English and Hindi. So as a subject, you should learn language. Okay, one thing. Second thing, you have told that English is an official language. Okay, language of Supreme Court and language of High Court. That all the decisions are made in English language. That is why you should have a mastery in the language. Somewhere or the other, or anyhow, sooner or later in our life, we need to read this type of judgment of High Court or Supreme Court. That's why we should have a proper knowledge of this language. Okay, whether India is a Hindi country, India is a country where the Hindi speakers are more than English. Even then, people are running after learning English, because the language of High Court and Supreme Court is English. That is why. Second thing, English is the language of technology. This time the MP government has started technical syllabus in Hindi. Otherwise, earlier the syllabus of technical was available in English only. Okay, that is why some of Hindi medium students was very much fearful to complete that course because of language problem. Okay, but this time the English has Hindi has been the language of technical also, language of technology, language of BTech, language of MTech. Okay, that's what MP government has started. Next thing is that English is a linking language. English is a global language. All the country speak English language. So because of the globalness, because of its spoken area, large spoken area, each and everyone should learn this language. Otherwise, you can't communicate with the people of other country, other states. Okay, even in India, that India is also a country like many states. India is also a country like
many countries. Just as we communicate the person of other country in English, in the same way we have to communicate the person of other state in India, because India has many languages and the people of India understand English easily. Whether they don't understand Hindi, but they understand English. When you go Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Maharashtra, Gujarat or anywhere where the people speak their native language, but as a subject language they know properly English also. That is why we should have the knowledge. Okay, English is linking language. Second thing, if you have an international vision, if you have a vision to work on international level, then you should have knowledge of this language. Otherwise you can't do better in the field of business, in the field of job. Okay, for example, you want to job in America or any other English speaking country, you must have knowledge of that language. Otherwise you will have a difficulty. How would you communicate to them? You are not a prime minister or minister that can hire a translator with you. Okay, you are not a prime minister or ministers, they have a translator. The translate translate then narrate. आप कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो हो नहीं कि भाई ट्रांसलेटर रख लोगे, वो ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेट कर करके बताएगा. आप तो एक कॉमन मैन ही हुए ना. ओके, सेकंड एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश improves your confidence, because generally the people suffer with low confidence problem because they don't know language. Okay, one day I was asking a question that why you people afraid of seniors, why you people fear with seniors. When you go to meet senior officers you feel fear, you lose your confidence, you feel depressed in yourself. Why? They are not giant, they are not a type of a bully, they are not a type of a danger animal, they are human being. Even then you fear. Why? Because you don't have a proper command over language. You think how can we communicate to them? If you are having a proper communication, you have no fear. That language also gives you a power of communication, and the biggest power in the world is your communication. Okay, that Subhash Chandra Bose said, you give me blood, I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. It means that word has a power. It depends on the person how he utter, how he use. Word has a power. It depends on the person which kinds of word he use. वह किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है. शब्दों में ताकत होती है. आपके शब्द या तो महाभारत करा सकते हैं, या आपके शब्द कोई बड़ा अच्छा काम भी करा सकते हैं. सो डिपेंड्स ऑन योर वर्ड्स. और शब्द कहाँ से आते हैं? लैंग्वेज से. इट्स कॉल्ड द लैंग्वेज. ओके, दैट लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू नो, the person who does the work physically, he earns very few money. He earns few money. The person who does technical work, the person earns more money than labor. And the person who command the people, who does work, he earns more money than labor and technologist. And the person who command over those people, the person who commands the manager, he earns money than manager. And the person who gives the speech earn more money and more name and fame than all. कहने का मतलब यह है, कम्युनिकेशन में इतनी पावर होती है कि जो व्यक्ति सबसे नीचे काम करता है, मान लीजिए अंबानी की बात करें, जो सबसे नीचे काम करता है उसकी सैलरी सबसे कम. उसके बाद जो थोड़े ऊपर जो पाना पिंचेस से काम करता है, टूल्स से, जो इंजीनियर टाइप का है, उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी. और एक उनके ऊपर रहेगा जो मैनेज करेगा सबको, उसकी सैलरी और ज़्यादा होगी. और जो सबसे ऊपर रहेगा मालिक, वो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ मुंह चलाता है. ठीक, और उसकी सैलरी सबसे ज्यादा. सैलरी इन द सेंस इनकम. इट मींस दैट द पर्सन हु यूज हिज स्पीकिंग, हिज सैलरी इज मोर देन द पर्सन हु डज द फिजिकल वर्क. शारीरिक काम करने वाले लोगों से ज्यादा उन लोगों की सैलरी होती है जो मुंह चलाते हैं, जो दिमाग चलाते हैं, मुंह चलाते हैं. दैट्स द रियलिटी. ओके, दैट इज व्हाई इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट यू हैव ऑब्जर्व्ड देयर इज अ हैंडसम सैलरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, especially in college. When you know the salary of professor, you find the salary is more than 2 lakh rupees.